bitter pill to swallow. Add as. When you're high up, everyone can hear your voice. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. When you're high up, everyone can hear your voice. Solidify! We're way behind schedule.
Stabilize! Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory?
Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Tourist spots. I have a few references. क्या बताना क्या कौन बड़बड़ कर रहा है भाई क्या बातें कर रहे हो यार तुम राष्ट्र Hey Catherine, it's us. Got any new commissions? Specifically one with a huge more attack perhaps? Paimon's just being enthusiastic. We're old friends now, she gets it. It's always a pleasure to see our two most avid adventurers again. Looking for the next challenge, I see. Actually, we do in fact have a rather urgent commission that is still open. Having read the details... Don't worry about that. We were just kidding. So what's the situation? To put it simply, the requester is looking for a temporary replacement actress for their musical. But the troupe has also been experiencing some financial difficulties. So unfortunately, they cannot afford to pay the replacement actress. That does sound like a tricky situation. So basically they're looking for a volunteer? That's right. Our adventurers reached out to many actresses, but none of them were willing to take the job. There are only a few days left until the performance. If they can't find someone in time, they'll probably have to postpone the show. And delays tend to create all sorts of new Got it. Oh, this one's a doozy. What do you think, Traveler? Even if we took the commission, neither of us have any experience starring in musicals. If you're interested in helping, why not start by having a chat with the requester? He's right over there. Maybe you can't fill the role yourselves, but you might be able to help him figure out another solution. Oh, it's that guy, huh? No wonder, he looks like he just ate a sour lemon. Paimon approves, let's go! Hello there, are you the guy looking for a new actress? Wait, I know you two! Are you really willing to act in my musical? Wow, sounds like we're pretty famous in Fontaine already. But to answer your question, neither of us have any experience in musicals. But we heard that you're in a bit of a bind, so we figured we could at least try to help you think of a solution. Ah, I see. It's okay. I knew that asking for a volunteer was a long shot. If we can't find someone to step in, we'll have no choice but to cancel the show. It would be such a shame. That's the thing. We're not some high-profile theater troupe, just a group of amateur enthusiasts. All our sets and props are very crude. We're grateful enough just to get an audience, never mind ticket fees. If we had a way to make this profitable, things might have turned out differently.
But now, it looks inevitable that we'll disband. Disband? You're split. Oh, I guess the lady at the Adventurers Guild didn't tell you? Yeah, this is supposed to be our final show together as a troupe. One last show. And after that, we go our separate ways. So we were really hoping to end on a high note. Nobody wants things to just fizzle out. Not after all the time and effort we've invested into it. Yeah, the leading lady, in fact. She's been dealing with a chronic illness ever since childhood, and unfortunately, it flared up again recently. It really drains all her energy, so she's in no state to perform. The show just won't be the same without her. But for everyone else's sake, I still hope we can find a way to hold the performance on schedule. Got it. We have a clearer picture now. Let's see if we can come up with any. What if we sponsored the show? Traveler, how much more are you carrying? Hello, Please, hello. There's no need to go that far. I wouldn't feel right asking such a huge favor. And I can't promise that we'd ever be able to pay you back. Good point. As Menta Those swine were the motions for the morning tastes the of finally same. rescuing the show. But where are those Should find someone who will put on who the best share? performance possible. वो बड़बड़ कौन कर वो जोंगली कर रहा था ना? Oh wait, what about जंगली कर दो। you know who? That's how you know we're the best of partners. भाई और 3 दिन भाई रुका नहीं जा रहा और इतना रुकने के बाद एक छोटा मैप आया ना दिमाग खराब हो जाएगा Popular with the crowd. अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं Supposed इनकी to be a piece of cake. 3 दिन में अपडेट कहाँ आ रहा है? 4 दिन बचे थे ना कल तो आज 6 3 दिन 6 दिन ना भाई। वेडनेसडे को आता है अपडेट। हाँ थर्सडे हैं 6 दिन है। पर ये बता जब वो रीसेट होता है तब अपडेट आता है ना मैं जरा आता हूँ 5 मिनट में। हाँ क्या हुआ? क्या बोले थे रोस्टर? जब बैटल पास रीसेट होता है तब आता है ना नहीं नहीं अपडेट बैटल पास कुछ दिन पहले रीसेट हो जाता है। ओ, तुम बैनर देखो, बैनर जो है ना वो अपडेट के 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आता है। तो मुझे लगा बैटल पास पे होता है बैनर देखो अभी कितना कितना टाइम दिखा रहा है। क्योंकि रुक वो एक डोमेन मार रहा हूँ Who are you यार thinking इतना of? वेट कर रहा रे Sounds like भाई someone famous. Her, पर 1 हफ्ते के बाद तो हो गया ना गेंशिन में कब अपडेट आया था right? जेंशन में अभी तो आया है अपडेट, कल ही तो आया है। वेडनेसडे को, वो वेडनेसडे को ही अपडेट करते हैं ना ये होयोवर्स के हमेशा। मतलब तक गेंशिन का केवल एक अपडेट है जो ट्यूसडे को आया है, बाकी हर अपडेट वेडनेसडे को आता है और उसका भी हर अपडेट वेडनेसडे को आता है। क्या नाम है स्टार रेल का। और हर एक अपडेट 6 हफ्ते का होता है, चाहे वो गेंशिन हो चाहे स्टार रेल हो। Nope. 6 हफ्ता मतलब कितना होता है Performed on stage before. I'm pretty confident that 6 हफ्ता मतलब कितना होता है 1.5 महीने। भाई 1.5 कितना महीना। फार्म करूं भाई, एक आर्टिफैक्ट ढंका नहीं दे रहा, मतलब क्या है ये। वो तो होता ही है भाई, हमेशा ही होता है। एक आर्टिफैक्ट भी नहीं मिल रहा भाई, इतना मार रहा हूं मैं लगातार, 100 कलेक्ट हो गए वो डोमेन के आर्टिफैक्ट, पर एक भी नहीं मिला उसमें से कुछ।
क्या बोलूं भाई ये गेम को। She has actually performed at a हाँ ना, number of 5 big-name दिन shows बचे before. फैस के गाने में। They were one of the reasons she was so popular. But even if she's no longer the का Hydro टीम Archon, वेस्ट है भाई। it's not like she's suddenly a commoner. She's still an idol to many people in Fontaine, including myself. Lady Furina might Azmanta feel as though out of swine place in an tastes the amateur troupe same, like ours. but where are those who share? Well, yes, but, fair enough. I mean, if she was actually willing to, then of course I'd be honored to have Lady Furina star in our show. I'm sure the rest of the troupe would be delighted too. I'm sure everyone in our troupe has probably dreamt of performing on stage with her one day. Of course, it all depends on whether she's interested. She might consider this opportunity beneath her. No point in stressing about that. We'll only know if we ask her. And besides, things are different now. There's no reason for her to be all high and mighty anymore. Thank you for your help. I guess I'll just stay here and wait for the good news. Good luck. Wait, The where does dead Furina actually live returns. nowadays? She used to live in luxury at the Palais Mermonia, but she's, moved out, right? As it happens, I have her current address here. I can provide it to you. Woo! When did you get here? I came over when things were starting to sound more promising. I Chandramukhi, thought I should be at the ready in case my Chandramukhi. assistance is needed. It is my duty to support commissioners in any way I can. Thank you, ma'am. Thank you so much. Well, now that we've got the address, we'll go find Furina. Back in a jiffy. यार क्या है, दर्द है भैया आर्टिफैक्ट। सोच रहा 4 स्टार के रख दूं। What the pain is happening? करक्टर यार कमीशंस क्लेम नहीं करने दे रहा है। वहाँ जाना पड़ेगा। तुम कौन सा वैसे निकालोगे? शाइनिंग नाइट निकालोगे? एक सेकंड, सॉरी क्या बोल रहा है? शाइनिंग नाइट निकालोगे तुम? Add asterisk. सॉरी, अरे भाई क्या छीका रही भाई, कौन याद कर रहा? याद नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? शाइनिंग नाइट? हाँ, कौन सा निकालोगे? लैंसलॉट की बात कर रहा है? हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं रुकूंगा वो कैरेक्टर आने के बाद ना बैनर, थोड़ी देर रुकूंगा। एक इवेंट आने वाला है, उसमें अगर उसका जरूरत पड़ा तो निकालूंगा, क्योंकि वो इतना खास नहीं लगा मेरे को। मतलब मेरे को मतलब कैरेक्टर वैसा टीम बिल्डअप के लिए नहीं, ऐसी टीम में रखने के लिए चाहिए था, पर वो ये मैं यूज ही नहीं करूंगा तो फिर फायदा भी नहीं है ना थोड़ा भी। मैं तो हुआ निकालूंगा। मेरे को तो अभी तो हीलर की जरूरत तो नहीं है, इसलिए मैंने निकालना तो निकाल देता, क्योंकि मेरे पास क्या बोलते हैं हीलिंग और ड्यूरेबिलिटी में दोनों जगह पे हीरोज है। हीलिंग में लोचा और बाइलू, और ड्यूरेबिलिटी में फुशवान और जेपार्ड। मेरे को वैसी वाली जरूरत तो नहीं पड़ रही हीलर की। देखूंगा, मैं सोचा था लैंसलॉट अच्छा रहेगा, पर है अच्छा, मैं देख रहा हूँ डैमेज दे रहा है बहुत भयंकर, पर वही है वो फिजिकल है वो उसके ऊपर, तो मेरे को सिल्वर वुल्फ चाहिए रहेगा, और फिजिकल एनिमीज तो ज्यादा होते नहीं है। वो तो है। देखना पड़ेगा, एक फिजिकल डैमेज डीलर चाहिए। वही है, क्लारा भी मिली है, वही है, क्लारा भी बना सकता हूँ अगर फिजिकल डैमेज डीलर चाहिए तो मतलब बिल्कुल ही जरूरत तो नहीं है, पर मैं सोचा अगर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा तो निकालूंगा, पर वही देखा मैंने उसका कुछ अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है वैसा। नहीं समझ गया मैं, समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद शायद सिल्वर वुल्फ आ रही है, तो मतलब मेरा तो 100% ही है ना, इसलिए रुका तो मैं सोच रहा हूं। सिल्वर वुल्फ तो मेरे पास है ही, तो मुझे तो वो निकालना नहीं है। निम्बस
मनी आर्टिफैक्ट मनी टट्टी एरिया एचपी एनर्जी रिचार्ज अटैक परसेंटेज पर डाल के रखा है इसमें एचपी डंडरो अटैक एचपी हीलिंग क्रेडिट एचपी एंड Share my knowledge. The doctor will see you. A flash maneuver. Remember, health comes first. Inazuma shines eternal. चोरी चोरी क्या क्या किया कौन जीता कौन हारा Mind the side effect. Committed to memory. Healthy. Allow me. मैं जा रहा भाई एनीमे देख रहे मेरे को लग रहा है ये पूरा हफ्ता मेरा एनीमे ही देखने में निकल जाएगा क्या हो गया कुछ है ही नहीं करने के लिए तारन में सब कुछ हो गया है हाँ होता है गेंशिन तो खेलता नहीं हूँ बाकी सब गेम में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती बस स्टार का जो अपडेट है ना वो एक्चुअली में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मैच कर रहा है उसमें इससे क्या बोलते हैं एक हफ्ते के अंदर इनमें की एक हफ्ते में अपडेट आ जाता है 2 हफ्ते में आना चाहिए था उसको स्टार को 2 हफ्ते में दोनों का अंतर होना चाहिए था 2 हफ्ते या फिर 3 हफ्ते का अंतर तुम लोग को लगता है ना ऐसे जो तुम दोनों गेम खेलते हैं पर हमारे ऐसे एक गेम खेलने वाले लोग को बहुत दर्द होता है भाई इतना रुक के नहीं तो टाइम तो उतना ही है टाइम थोड़ी ना बढ़ रहा है मैं कह रहा हूँ 6 हफ्ते ही हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 हफ्ते से बड़ा वो क्या कहते हैं अपडेट हो 6 हफ्ते नहीं ही वो हो समझ में आ गया लॉन्च किया था ना जब अरे लोगों ने नहीं मेरा मतलब है जब मैं स्टारल के लिए खत्म होता हूँ तो अपने ग्रुप में तो गेंशिन खेलने वाले हैं ना समझ रहा है तो वो लोग खेलते रहते नया नया सामान मिला करके तो अपन मेरे को वो वेट में दर्द हो रहा गेंशिन वाले अपने दोस्त सब खेल रहे हैं क्योंकि उनको नया अपडेट मिल गया नया टास्क वास्क और जो भी मिशन आए पर स्टार रेल वाले रुके ऐसा ये कोई इशू नहीं है कि 6 हफ्ते में ही आएगा करके वो है कि ना एक जगह पे अपडेट मतलब एक जगह पे क्या बोलते हैं उसको क्या एक जगह कुछ ना कुछ नया मिला ना करने के लिए और हमें रुकना पड़ रहा है वैसा वाला से जेनलेस कुछ तो जोन जीरो ऐसा कुछ तो आ रहा है वही हो हाँ। सही है लेकिन मेरे ख्याल से वो उस टाइप का है बस बात करने वाला भाई छी मैं पक्का कहता था कि मेरे हिसाब से वो सिर्फ बात करने वाला गेम है बहुत सारे ओपन वर्ल्ड गेम्स आ रहे थे भाई वो आधा एक तो भैंस के वो कोई कौन सा था वो वुदरिंग ब्लैक क्लोवर का कुछ आने वाला था अरे एक वुदरिंग वेव के नाम से गेम आने वाला था वो आया ना शायद अभी इसका क्लोज बिट है तो देखो कब लॉन्च होता है वो भी काफ़ी अच्छा है गेम देख से तो काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन वो गेम मतलब जैसे गेंशिन जैसा काफ़ी इजी नहीं होगा गेंशिन स्टार रेल जैसा तो वो काफ़ी टफ होगा बता रहे हैं उसका गेम प्ले काफ़ी अच्छा है देखा है वैसे शायद उधर में एनिमे वाले ओपन वर्ल्ड आने वाले थे भैंस के अभी तक आया नहीं वो ब्लैक क्लोवर आना था शायद ना पता नहीं कभी न्यूज़ भी नहीं आ रहा भाई कुछ कि जिंदा है या नहीं गेम में डेवलपर मर गए ब्लैक क्लोवर का मुझे पूरा देखना है भाई उसके 10 एपिसोड बचा है पता है मुझे देखने का मन ही नहीं कर रहा है अभी ब्लैक जब से खत्म हो गया ना वो क्या कहते हैं एल्फ वाली आर्क तब से फिर मेरा मन ही नहीं किया उसको आगे बढ़ाने का था ब्लैक क्लोवर में तो मेरा अलग सीन चल रहा मैंने कहाँ तक देखा मुझको समझ में नहीं आ रहा उसमें कहाँ तक देखा तुम देखो मेरे टाइम पे देखो तुम एल्फ वाला तो देख ही रहे थे वो जब उससे जो लड़ाई हो रही थी वो डीमन से लूसीफर से क्या नाम है उसका लूसीफर ही नाम था शायद तुम एक एपिसोड मैंने देखा था उसमें जब मतलब कि 2 साल पहले 1 साल पहले जो भी था अब तुम वो वाला देख रहे थे उस टाइम पे और उसके बाद तुमने कितना किया है वो मुझे नहीं पता डायमंड कोई डायमंड करके कोई कुछ रहता है डायमंड वाले ग्रुप डायमंड किंगडम में वो ब्लैक कलर का भूत आता है देख दूसरा डीमन होता है
उधर उन उसको उससे फाइट मेरे को उतना याद है, उससे फाइट क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा एपिक था वो पूरे टाइम पे, वो याद है। पर वो फाइट खत्म हुआ या क्या सीन है मेरे को याद नहीं। मेरे ख्याल से अभी तक तो उतना आया ही नहीं है कि उससे फाइट हो। आया ना वो एक जगह पे जाते हैं अंदर और उससे फाइट होती है। पता नहीं, मेरे 10-12 एपिसोड बाकी हैं तो उसी में से किसी में होगा। अभी नया सीजन आया है या नहीं उसका? अभी तक तो नहीं आया मेरे ख्याल से। तो मतलब मेरा भी मतलब हो लगभग पास में है ना एंड के। एक और बार देख लूंगा वो, अगर याद भी रहेगा तो पता चलेगा ना मेरे को लग रहा है कुछ एपिसोड्स आए हैं भाई, मेरे को लगा बहुत नहीं देखा है मैंने। ब्लैक क्लोवर एक 170 एपिसोड्स निकाले भाई। वन से दिखा रहा भाई, शांत रहो तू। मेरे को दिखा रहा वन से। अरे पर यार याद भी नहीं भाई, 101 से देखना स्टार्ट करता हूँ देखते। कौन सा देखा है याद नहीं आ रहा। एनीमे में कॉपीराइट स्ट्राइक लगता है क्या साउंड पे? मुझे नहीं पता लगता कि नहीं लगता। तेरा वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। नहीं तो वो मत करना वीडियो, मतलब कि तू चलाएगा तो मेरे में ऑडियो कैसे आएगी? तेरा ऑडियो लीक होता है। हाँ कभी कभी तू बता देना हो रहेगा तो। ठीक है ठीक है। फुरीना 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 का कष्ट आगे बढ़ाते हैं, ये वाला है शायद। ये तो देखा है भाई, ये एल्फ किंग से झगड़ा होता है। आराम से देखूंगा। मैं नया एक एनीमे देखा, मतलब रील्स पे, रुक बता दो। 2 एनीमे देखे, वो रील्स पे आता है ना, मैं सेव करके रख देता हूँ। कुछ कुछ अच्छे निकलते, कुछ कुछ टट्टी होते। एक है डेड मैन वंडरलैंड और एक है आई एम गिव, इसका नाम कुछ बड़ा नॉवल है ये, इसका टाइटल I am giving the disgraced noble lady I rescued a crash course in naughtiness. क्या है तो बड़ा नाम है। कुछ भी चलता है आपके यहाँ। अरे इसमें एक डीमन किंग वाला रहता है रे, डीमन किंग बहुत स्ट्रांग होता है ना। वो बंदा शायद रीइंकार्नेट होता है। वो रील में तो इतना दिखाता, वो एक बंदा रहता है सामने खड़ा और ग्रॉक जैसा एनिमी उसके सामने रख के उसको मारता है, हाथ से मारता है, वो हिलता ही नहीं उधर से। और फिर वो आग बंद रहता है शायद उसका, तो खुलता है, ऐसा कुछ तो बड़बड़ कर रहे थे वो लोग। तो मतलब मैं कोई है ना, प्रोटैगनिस्ट बहुत स्ट्रांग है इसमें, तो मेरे को वो सब एनिमे पसंद आते। वो वाला तूने देखा है, सो आई एम ए स्पाइडर सो व्हाट? ये कैसा एनिमे भाई? बढ़िया एनिमे। शुरुआत में मुझे काफी बोरिंग लगा था, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा काफी ज्यादा सीरियस हो गया, मतलब हद से ज्यादा सीरियस हो गया। तो आई एम अ स्पाइडर सो व्हाट? हाँ, सो आई एम ए स्पाइडर सो व्हाट, वो रिइंकार्नेशन वाला है। सो आई एम अ स्पाइडर सो व्हाट। वो शुरुआत में तुम देखोगे ना तो भाई ऐसा लगेगा क्या, मतलब बच्चों वाला एनिमे। फिर बाद में भाई एक सेकंड, ये देखा ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे स्पाइडर्स के साथ रहता है, ऐसा कुछ रहता है क्या सीन? वो स्पाइडर ही मतलब रिइंकार्नेट होती है जो। नहीं पर वो जब रीइंकार्नेट होता है तो सेपरेट होता है ना उनके बंद से, ऐसा कुछ है क्या? क्या उनके बंद से सेपरेट होता है मतलब उनका एक ग्रुप रहता है बच्चे लोग का, फिर ये सेपरेट होता है, ऐसा कुछ है क्या? मैंने देखा सा लग रहा है बहुत ज्यादा। मैं एक एपिसोड देखता समझ में आया। मुझे एक्चुअली में काफी अच्छा लगा था, इसका सीजन 2 आना चाहिए।
अरे वो कौन सा एनीमे था भाई? कौन सा? वो खत्म हो गया क्या? और उसकी एक कौन सा? मम्मी पॉप स्टार होती है बहुत बड़ी, जो अच्छा मर्डर वो हो जाते हैं। आइडल, माय आइडल को उसका क्या सीन हो गया भाई उसका? पता नहीं, कुछ मैंने तो याद उसके नहीं। 2 एपिसोड देखे हैं अभी तक, बस वो पहला देखा और दूसरा देखा है वो। आइडल का इनका आइडियल क्या होता है? कौन क्या स्पेलिंग होता है आइडल? आइडियल लिख रहा हूँ मैं, IDOL होता है ना नॉर्मल? हाँ IDOL होता है। आइडियल लिख रहा हूँ। माय स्टार या फिर माय आइडल है, कुछ यही नाम है उसका। आइडल नहीं है, आइडल रिलेटेड लिखना है माय। The show begins. क्या था वो Mind इसका? the side effects. बेटा ऐसे भी कुछ खास एनिमे नहीं लगा, इंटरनेट में तो बोरिंग सी हो गई थी। मुझे उसका पहला एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा था, दूसरे एपिसोड से फिर थोड़ा सा वीक वो लगने लगा मुझे, तो इंटरेस्ट थोड़ा मेरा कम हो गया उसमें। अब रात तक रुकना पड़ेगा भाई JJK का एक एपिसोड के लिए। अच्छा JJK का अगला एपिसोड आ रहा है, उसका एमिनेंस का क्या कितना कल आया होगा ना एक एपिसोड, 8 को आने वाला था। 6 एपिसोड आए उसके। अब मुझे याद नहीं कितने एपिसोड थे, लेकिन 8 को एक एपिसोड आने वाला था, तो 8 तो कल ही था। A bit of help is swallowed. 6 आए, 6 देख लिया मैंने। अनडेड अनलक देखा क्या? तो अनडेड अनलक नहीं, अच्छा है। क्या होता है उसका स्टोरी है, स्टार्टिंग में एक लड़की बताते हैं जिसका इतना गंदा लग रहा था कि कोई उसको छूता है ना, या वो किसी को छुए ना, तो उस पे बहुत गंदा अनलक आ जाता है, मतलब बैड लक आता है जो भी उसको छूता है या वो छूती है किसी को भी। और उसका छूने से वो अमाउंट ऑफ अनलक मतलब डिपेंड करता है कि ज्यादा छुए या बहुत ज्यादा, मतलब समझ रहा है ना? ऐसा फिंगर टच करे तो कम अनलक आएगा, पूरा हार्ट टच करे तो ज्यादा अनलक आएगा, और ऐसे गले वाले मिल जाएगी तो बहुत ज्यादा अनलक आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन टाइप। तो वैसा टाइप का रहता है। और एक उसको मतलब वो जिसको भी छूती है तो मर जाते हैं ना, तो पूरे उधर डिप्रेशन में रहती है। ये क्या सीन है भाई, मैं किसको भी छू रही हूँ, मर रही हूँ, तो मैं अपना लाइफ, वो उसका एक वो पसंद होता है, वो कॉमिक बुक में एक वो रोमांस रिलेशन, रोमांस और कॉमिक अच्छा लगता है, तो उसको वैसा वाला जीना है, पर वो जी नहीं सकती क्योंकि कोई उसको छू नहीं सकता या ना वो किसी को छू सकती है, तो फुल डिप्रेशन में जाती है। तो फिर एक टाइम पे वो ब्रिज से कूदने वाली रहती है, मतलब अब मैं और नहीं कर सकती, किसी को दुख नहीं दे सकती मेरी वजह से, मैं खुद मर जाती हूँ। तो फिर एक बंदा एकदम से आता है और ये रहता है अनडेड, इसके पास पावर रहता है, वो मर ही नहीं सकता, इसका गला भी कटेगा ना तो भी वो रीजनरेट कर देता है पूरा बॉडी, वैसा रहता है, मतलब कुछ भी हाथ वाथ कटा रीजनरेट कर देता है, और उसको मरने का रहता है। तो यही है स्टोरी कि वो इसके मतलब वो इसके क्या बोलते हैं, इसके थ्रू मरना चाहता है, तो वो टेस्ट करते कितना अनलक इसका स्ट्रांग हो सकता है और कैसे कैसे। तो वो झूठ बोलती है कि मतलब वही रहता है ना, उसे छुआ तो इतना अनलक मिला उसको, तो वो सोचता है अभी हम सेक्स करेंगे तो बहुत ज्यादा अनलक मिल जाएगा, तो फिर वो झूठ बोलती है नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मेरे को भी वो रहना चाहिए, मतलब मैं भी विलिंगली करनी चाहिए, तब जाके ज्यादा अनलक आएगा। ऐसे ऐसे तो और लंबा चलता है कि चलो देखते कितना तक जाता वाला सीन। अच्छा है, बहुत फनी है, फनी भी है, सैड भी है, थोड़ा देखेगा तो बदल जाएगा। Taking a turn for the better. A bit of help is swallowed. Undead unlove. Now you shall perish. Remnants in Shadow के एपिसोड कब आते हैं? 15 वो भैंस के कल आए 6 दिन और। हाँ तो मतलब कल ही आया ना भाई, तो मैं बोल रहा था कल एक आया होगा। मतलब स्टार रेल आते ही एमिनेंस इन शैडो का, रेमिनेंस क्या नाम है उसका, एमिनेंस इन शैडो का एक नया एपिसोड आएगा। कितना वेट कराएंगे बेटे बेटे, क्या करे, करना है कुछ काम, नया एनीमे अपलोड करो। अरे वो भी है ना मतलब भाई सोलो लेवलिंग, शायद पता नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं है सोलो लेवलिंग। दिसंबर के स्टार्ट में, दिसंबर के एंड में।
मैंने देखा ही नहीं है। सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स आने वाले। अरे नहीं, नया वो है, क्या बोलते हैं, मांगा था वो, हम्म। बहुत अच्छा चला था। अकेले लेवल अप करता है वो? उसका स्टोरी बताता हूँ कैसा रहता है। देख, मेरे को, तेरे को पता है ना मेरे को कैसे पसंद है, वो प्रोटैगनिस्ट स्ट्रांग होना चाहिए और थोड़ा सुपर नेचुरल वाइब रहना चाहिए। मतलब नॉर्मल रोमांस कॉमिक्स, रोमांस वाले एनिमे को पसंद नहीं आते। तो इसमें कैसा है कि एक बंदा रहता है जो बहुत वीक रहता है, और उसको मतलब उसमें कैसा रहता है पता है, कैसे बोलूं मैं तेरे को, डोमेन्स होते हैं। वो डोमेन्स में ना बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जिनको ये लोग हंट करके पैसा कमाते हैं। तो ये एक हंटर बनता है, पर ये बहुत वीक हंटर रहता है। इससे छोटे छोटे डीमन मतलब मॉन्स्टर्स भी नहीं मरते, कैसे भी करके एक दो मार के वो गुजारा निकालता है। फिर एकदम से ना वो एक रिक्रूट होता है मतलब एक ग्रुप में कि वो लोग अभी एक डोमेन मारने वाले रहते हैं। पर सीन क्या रहता है कि डोमेन रैंक्स होते हैं। इनको पता रहता है कि ये डोमेन बहुत वीक है तो कोई इशू नहीं है, पर वो लोग जैसे ही घुसते हैं ना तो अंदर ही अंदर एक और रूम आता है जो बहुत बड़ा, मतलब ज्यादा रैंक का रूम रहता है वो। तो उधर जाके वो लोग एक आइडल वाइडल से मिलते हैं। वो मेरे को सही से याद नहीं, बहुत पहले स्टोरी देखा था। तो एक आइडल वो सबको मार देता है और इसको मारते मारते विश देता है, ऐसा कुछ तो विश देता है। तो उससे वो रहता है ना गेम में जैसे अपने पास स्टैट्स का पेज होता है, वैसा कुछ इसको पावर देता है। तो इससे क्या करता है, जैसे लेवल अप होता है तो उधर दिखता है, तो खुद से लेवल अप होके बेटर होता रहता है। पहले तो फुद्दू सा दिखता, फिर एकदम से लंबा मसालदार बॉडी बन जाता है अलग ही, मतलब पतला वाला, ऐसा बॉडी बिल्डर वाला नहीं, मस्त है वो। पर फिर स्ट्रांग हो जाता है। फिर उसके बाद इसके बाद जिसको मारता है ना वो, जैसे बोलो अगर सोच उसने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार दिया तो उसका कुछ तो शैडो पावर कुछ तो होता है। तो वो पावर से वो उसको अपना सोल्जर बना सकता है जिसको मारा रहता है उसने, वैसा वाला टाइप रहता है। तो उसके बाद बहुत वैसे बड़े बड़े लोग को मार के उनको अपना सोल्जर बना के अपना ग्रुप बड़ा करता है। तो वही है ना, अकेला ही कर रहा है सब कुछ, तो इसलिए सोलो लेवलिंग। और मतलब 0 रैंक से स्टार्ट करता है और ऊपर 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 चढ़ता रहता है, इसलिए उसका वो नाम है सोलो लेवलिंग। पर उसका मांगा बहुत तगड़ा है भाई, मांगा पड़ेगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। कोई पर जापानीज एनिमे नहीं है, कोरियन है शायद। कोरियन एनिमे, कोरियन। Questioning my cooking skills, the audacity. क्रंची रोल पे लिखा था कि आ रहा है और ये GTA 6 का ट्रेलर आ रहा है दिसंबर में। My meals are a little simpler now too. Besides, I'm sure I could master dishes like la lettre focilor or blubber profiteroles in no time if I felt so inclined. There it is. You don't know how to cook. Not yet, maybe, but anyway, what are you even doing here? I do hope you didn't come here just to release date speculations. Let me first be clear that I'm not taking guests at this time. So if you're just here to clown around, then please be on your way. Shoot! Sorry! We're sorry! Please don't be mad! Yeah, exactly! What the traveler said! Paimon wasn't... इसकी बहस की जनवरी 2024 बता रहा था। My help? Well... That should be expected and expecting an announcement. Information will be revealed on November 1. Stay tuned. Don't worry, it's nothing November 1 तो हो गया। It's just very specific, and you're the one with the power to help. Oh? Well, if that's the case, then fine. I'll spare you the lecture about your attitude just now. So tell me, what specifically makes this matter so... Crunchyroll exclusive आ रहा है क्या ये? Crunchyroll में आता है तो anime में आ जाता है ना अभिषेक? You couldn't have come all this way just to amuse yourselves at my expense. After all,
I was once the brightest star in all of Fontaine, well versed in all the various performing arts. A mere musical is well within my capability, but given the present circumstances, I'm afraid I must regretfully decline your casting request. How come? It sounds like this would be a breeze for you. True, but I have made a मैं decision. म्यूट हुआ एनीमे देख रहा हूँ जब कुछ रहेगा तो बताना ठीक है Although I am no longer required to play the role of the Hydro Archon, the time I spent inhabiting that character has left an indelible mark on me. Centuries of pretending to be a different person changes you completely. I'm not the same person I once was. Of course, that can't be undone now. It's too late, and I have no intention of reinventing myself all over again. But at least I can say that I no longer desire to play any new roles. Paimon can understand, but this is just a one-off part to fill in for someone who's sick. Surely that's okay. Whether it's a one-off or not, it's a boundary that I've committed to no longer cross. If I make an exception to the rule now, I'm just leaving a back door for myself, which would be the same as not having a boundary in the first place. So I'm not going to perform, and that is that. Okay, guess there's no convincing you. Well, is there anything else we can do to help out the troupe? Otherwise, they'll just have to disband without any fanfare. Do you know any other actors who might be interested in the role? Nope. Short and to the point. Okay. I've never been great at maintaining relationships. Besides, anyone I've ever worked with probably couldn't wait to get rid of me. Since I'm just an ordinary person now, they'll probably just laugh in my face if I go asking them for help. True, but I mean, could you even blame them? I show up out of the blue, begging and groveling for their help with a show they won't even get paid for? Oh, no way. I'm dying from embarrassment just thinking about it. Nope, not happening. Well, is there anything else we can do? This performance really means a lot to the guy we're working for. Have I not made myself clear? You're barking up the wrong tree. I don't want this job, nor do I know of anyone else who would. Sorry. I didn't mean for that to sound so harsh. I wish I could help, really. But if I thought I had the answer to this problem, I would have said so by now. It's all right, Furina. Paimon just wanted to make sure we tried everything. Oh, everyone in the troupe will be so disappointed. Yeah, I guess that's all we can do now. All right, then. We'll see you around, Furina. Toodaloo to you, too. I'm going home to take a rest now. It's too bad, but we have to respect Furina's decision. Maybe the thought of performing brings up too many painful memories now. I'll think about it. Huh? What's going on? Are they arguing? That's besides the point. I'll ask you again. Why did you start looking for a replacement without my consent? When did I tell you I'm going to take a step back? You didn't need to say it. We've known each other for how long now? We know the signs. But you never tell us about your illness, even when it's clearly flaring up. And that gives you the right to make a decision on my behalf? Shortly after you left, the troupe's lead actress came to the Adventurers Guild. She believes that she's healthy enough to perform. Excuse me, but can you both take a moment to discuss something else for now? The adventurer assigned to your commission has returned. Sorry, I was just dealing with a little misunderstanding. So, how did your conversation with Furina go? Sadly, it's a no from her. We tried to persuade her, but she wasn't having it. She doesn't want to play the role for personal reasons. I see. Well, circumstances have changed a little, so maybe that's not such bad news after all. You see, our leading lady has just informed me that she's well enough to make it to the show after all.
Staging the musical with the full original cast was always the dream, of course. Oh, right! Sounds like everything worked itself out then. Yeah, she'd be livid. We'd get the scolding of a lifetime. Jeez, is Lady Furina really so harsh with people? Only joking, calm down. So, guess we can consider this case closed now, huh? Despite the fact that we failed to complete the commission, we were still racking our brains for ideas on the way back here. Look, there's no point arguing with you about this anymore. You've made yourself very clear, so I'll stop looking for a replacement. This is the last chance we have, though. If your illness flares up again, there won't be time to find anyone to replace you. So, are you absolutely sure you'll be able to handle it? The whole team is putting everything they have into this final performance. We have to make sure it goes ahead. Yes, I'm completely confident. I've been taking a new medication from the doctor, and it's working brilliantly. I'll definitely be able to tough it out until the performance day. I share everyone's desire to commemorate all our years as a troupe with a proper farewell show. So the last thing I want is to be left out. Every one of us thinks of this troupe as their home, myself included. You're right. I'm sorry. I let myself get too worried about the show. I should have asked for your permission first. All's well that ends well. Sounds like the show will go on. Sure. Hey, how did you... I was just passing by because I realized I forgot a couple of items on my shopping list. All right, I'm coming. No need to drag me. Hello, one and all. I couldn't help but overhear your conversation just now. Furina? Didn't you say you were gonna take a rest at home? What are you doing here? I was just ever so slightly concerned about the situation you mentioned. Yes, a teensy bit concerned, that's all. When you came to talk with me earlier, I jumped right to explaining my position and said some strongly worded things. And all before I even had a full grasp of the situation. Anyway, I just feel a bit bad about how it went down. I'm sorry, Paimon. Oh, it's totally fine. Paimon didn't take any of that personally. You really have a knack for asking the most uncomfortable questions, don't you? I felt very sheepish, having had a change of heart after flatly refusing you. And then, to make matters worse, you caught me. But in any case, it sounds like the issue has already been resolved. Yeah. When they said they were gonna ask for your help, I almost had a heart attack. I mean, how could we be worthy of having Lady Furina star in our show? There's no need to think like that. And no need to keep addressing me as Lady. Just Furina is fine. I was wondering, if this troupe is so important to all of you, why does it have to disband? If the difficulties are purely financial, then there must be a solution. You could put the shows on pause while you look for a sponsor, for instance. Everyone seems so devoted to the troupe. I'm sure if you keep chipping away, you'll find a way through. We all want to believe that, but some things are just beyond our control. Everything's been going downhill ever since we lost our director. She was the heart and soul of our troupe. She kept us going. Her name was O'Reilly, and she was the founder as well as the artistic director of our troupe. And tragically, she was a victim in this serial disappearances case. What? That's actually how I recognized these two. It was all thanks to their efforts that the true culprit was brought to justice. But still, no sentence can bring our director back to us. She was a loyal fan of your performances, Miss Furina. They were what first inspired her to get into musical theater. She rallied many people around her who were destitute or had lost their sense of purpose in life, and convinced them to join her troupe. She wrote her own scripts, acted on stage, and mentored each and every one of us. People loved our performances back then. We seemed to be going from strength to strength. Things were really looking up for us. And then disaster struck. Yeah. After that, the entire troupe fell into disarray. None of us know anything about script writing, let alone how to handle the business side of things.
We've been doing the best we can. But despite our efforts, things are slowly but surely falling apart. It's agonizing. But ultimately, we'd rather end things now on our own terms than stick it out to the bitter end and watch all our dreams turn to dust. Oh. What a terrible waste. A gifted artist from humble beginnings who achieved so much and no doubt had much more to give. And then her life was so cruelly taken. I suppose it's fair to say then that this final show, besides being your farewell to the stage, is also your final gift for her? Yes, exactly. We all miss her terribly. Well, good thing I followed the traveler here. After hearing this tragic tale, I can no longer stand by and do nothing. Furina. I know what you're thinking, but I by no means plan to cross the boundary I've set for myself. Besides, they're no longer looking for a replacement anyway. I can, however, provide some artistic guidance from the vantage point of a highly experienced audience member, but only if you feel this is something that would help, of course. Oh, most definitely. We'll take any guidance that you can give. We unfortunately don't have any budget for a consultant, though. Will that be a problem? I don't need any compensation. All I'd ask in return, if you're willing, is that you tell me some more about the life and work of your late director. Something I've begun to realize since my departure from the Opera Epicles is that there's a lot you don't see when you observe everything from on high. The law only judges criminal behavior and does not weigh human emotion. The court's verdict can settle the question of criminal liability, but what about all the unresolved emotions of the parties involved? What happens to them? An interesting answer. But if you ask me, I think all emotion shall ultimately return home to the heart and slowly settle with the passage of time. Take, par exemple, how this troupe pines for their late director. Things such as this I have never witnessed before, and so I should like to observe, perchance to understand. Still a fan of your old dramatic monologues then, huh? You just want to get back in on the action, don't you? No. This is a completely different situation. Pearls before swine. The name's not Swine, it's Paimon! Would you be willing to join me? Come on, take a break from adventuring to listen to a story. क्या बात है रोहिता सुबह Thank you all सुबह so much. Our director was a huge fan of Miss Furina's performances, as of course we all are. All right, follow me. हेलो Go to our usual practice आज space. कैसे Please excuse the size. लेक्चर देख रहा था सुबह A little on the smaller नींद नहीं आई side. तो मैं सोचा लो डीसी काला सोए नहीं हो अभी तक नहीं सोया था फिर लेक्चर देख रहा था क्या एमएल से संन्यास ले लिया क्या तुमने भी नहीं आज खेलूंगा आज चोमा भी खेलने वाला मैं अभी बहुत कम ही खेलता हूँ बस बीटी का 100 ही करना है ना तो 30 पॉइंट और चाहिए एक दिन में 10 होता रहता है ये 100 का डील कर रखी है क्या कुछ हाँ डील ले रखी है क्या कुछ नहीं ऐसे ही कर रहा था फिर ऐसे मैंने पूछा बेटी को हर सीजन तो 100 कर दूंगा टारलेट भेज देना बोला ओके क्या हर महीने मतलब हर सीजन Lady Furina? हर सीजन एक What's Lady Furina doing? से क्या होगा हर 50 का एक मिलता है मेरे को या 50 रुपए 50 का एक 50 स्टार्स का एक स्टारलाइट अच्छा Allow me अच्छा to explain. As of ठीक है ये today, भी ऑफर Lady अरे मैं वैसे भी फ्री में करना था Furina will be तो अगर स्टारलाइट मिल ही रहा है तो a क्या इशू है Middle उसमें Oceanid in the role क्योंकि of मेरा artistic अकाउंट देख वो मेरा फ्री का स्टारलाइट हुआ क्योंकि मेरा अकाउंट कोई ना कोई खेलता देख अभी 70 स्टार्स पे रहेगा लगभग on our behalf. तो मेरे को मेरे अकाउंट में खेलने की जरूरत ही नहीं है You bet. किन से करके सब खेलते रहते हैं You helped bring our तो फ्री में उसका स्टार अप होता है तो मैं बोला मैं अपने अकाउंट में क्यों खेलूं क्या बोल रहे हो रास्ता अकाउंट ही नहीं रहा तुम्हारा So you were नहीं नहीं कोई ना कोई खेल के कर ही रहे थे अभी निम्बस खेल रहा है name of our final show. It's an तो ऐसा unfinished कोई ना कोई खेलता ही रहता है कोई ना कोई one of our greatest regrets is तो that she never वो got फ्री to रैंक अप ही होता रहता है So तो फिर बोला मैं किसी और का रैंक अप कर लूंगा successful show, we can all take तो some मेरे को flaws स्किन्स वाला अकाउंट चाहिए ना रैंक अप करने के लिए तो मैंने बीटी से पूछा
बेटी मेरा तो हो रही है, तेरे में स्किन से मैं तेरे में खेल लूंगा तब तक। बोला हाँ कर ले। फिर स्टार्टिंग में तो फ्री का था, फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया, बेटे हर सीजन तो करता ही हूँ, स्टारलाइट कार्ड दे दो। बोला ओके। Despite the protests of her family, she बढ़िया है, longed to बढ़िया live है। just like any other human. And sure enough, she found friendship and even love. Everything seemed perfect, but one day, her true identity was exposed, and her world came crashing down around her. So far, so good. क्या तू भी गेंशिन खेल रहा है क्या? Tale. What हाँ happened after that? काम वाला गेंशिन या खुद का अकाउंट वाला गेंशिन? बस सुबह सुबह मिली है This was as मजदूरी, far as the बैठ रही director हूँ अभी। got with her script. We need a proper ending so we can bring this musical to the stage. But चलो मैं एनीमे देख रहा हूँ, ओके? opinions on which direction to take it in. म्यूट We रहा, still haven't कुछ देगा तो decided बता between देना। a happy ठीक, ठीक। ending or a true-to-life tragedy. अभिषेक By true to life, you क्या mean हुआ? the director said कल्ली स्टोरी। स्टोरी कुछ कर रहा हूँ। Yeah. अरे Like भाई they कितना say, टाइम ले रहे हो यार। stranger than ये तो कल fiction. एक्ट कर रहा था ना, आज स्टोरी कुछ कर रहा हूँ। But हाँ मतलब that makes वही me question एक्ट 5 हो whether गया। we really want Act to use 5 तो the complete हो stage गया। to pass our raw कितना pain depressing onto the लगा। audience. काफी ज्यादा। पता नहीं क्या कर रहा है गेंशिन। A lot of the time, people come to watch a show ये just फॉन्टेन में hoping जितने for भी some क्वेस्ट light आए ना, सारे के entertainment. सारे वैसे ही हैं। We have to consider their emotional नहीं stake भाई in कुछ this, ज्यादा ही हो गया not यार। just our own. हाँ फरीना को हम लोग को one समझ last देने thing. पतोले वाली। We're still waiting on confirmation from two of और our कहाँ main actors. पीछे The पीछे first is क्या ही Paulo, चल रहा है भाई who plays the साहब। protagonist's lover. He's locked himself away to focus on writing an ending for the script. But the deadline's passed, and we still haven't heard from him. The other is Villemont, who plays the main antagonist. He took the director's death pretty hard. Hasn't set foot in the city since. He did write to us, promising that he'll be there for the final performance, but we haven't seen or heard from him since. So we're not really sure what to make of that. Huh. Although, now that we have Miss Furina helping us, maybe we should take the opportunity to get everyone back together. What opportunity? What do you mean? Maybe you're unaware, but your name has always been like a rallying cry for us. Our director was constantly singing your praises. All of us look up to you as a role model. Oh, stop. You're making me all flustered. Although, not in a bad way. I suspect the reason they're dragging their feet is that they have their doubts about whether the show will really go ahead, considering all the issues you've been facing. But one by one, all the obstacles are being removed. Now is the time to rally the troops. Makes sense. Okay, priority number 1. Let's check in with Paulo and see where he's at with the ending. He went back to Poisson a few days ago. Said that staying in a friend's home might help him to relax. and ये सब escape the बेकार है यार ये isolation. ओशनाइट I thought बॉस। the last thing his friend would want right now would be to take visitors, given that Poisson was flooded not too long ago. But I guess it's the opposite. A friend in need and all that. Yeah, maybe he could use some company. Poisson. Nothing. I suppose my presence will be indispensable if we are to restore his faith in the show. So allons-y. To Poisson! If I remember correctly, this is where he's staying. Who is it? It's me. Is the script ready? You came all the way here for that? All right. Forget that for now. Just come on out. We've got some great news. Nice try. Look, just give me some time, okay? I'm just wrapping up this last part of the script. I'll be out once I'm done. Okay then.
Looking forward to your masterpiece. So, as expected, he's missed the deadline. The ending is one of the most important parts of the show. Even once he's done, it isn't final until we've all had the chance to read through and make sure we agree on it. Someone told me they'd just seen you in Poisson. I assumed it was a case of mistaken identity, but sure enough, here you are. And Furina. I was wondering if we might run into her. So, you're here for Paolo? Looks like he could be a while, so feel free to take a stroll around town in the meantime. I've made all the arrangements already. Oh, it's okay. We can just wait here. Thank you for being so considerate, Miss Navia. That sounds wonderful. We'll take that stroll. Get over here, you! How oblivious are you? अभिषेक जरा फरीना का बताना तो क्या है टीम कॉम क्या सीन है हेलो अभिषेक क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ ये फरीना का टीम कॉम वगैरह बताना तो जरा अभी देखो मैं तो टीम यूज कर रहा हूँ न्यूविलेट है जोंगली है फुरीना है और बाइजू है मतलब उसका अल्ट वगैरह करता है क्या मेरे को समझ नहीं है फुल टाइम डिस्प्ले है उसका तो हाँ वो अल्ट डैमेज बढ़ाता है टीममेट्स का बफ क्या कहते हैं बफ टाइप का है कौन सा मतलब एलिमेंट या फिजिकल मेरे ख्याल से सबका बढ़ाता है शायद वो देखना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन वो जब भी एचपी कम होती है तो वो फैनफेयर पॉइंट्स बढ़ते हैं उससे कोई ना कोई बफ मिलता है How are things in Poisson now? Any better? Things are on the mend. अपने पास हाइड्रो आर्कन पहले से ही था यार Some people may never recover from the trauma they experienced. वही निकालना था I'm क्या तुमने नहीं निकाला sorry to hear that. हाँ पहले ये फरीना सोचा था फिर फरीना से आया का आके वो निकाल फरीना ली अभी लोअर के हिसाब से तो भाई न्यूविलेट सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है स्टोरी के हिसाब से एक्ट 5 तुमने देखा है पूरा मतलब किया नहीं है देखा मैंने यूट्यूब में तो वही उसके हिसाब से न्यूविलेट सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है न्यूविलेट के सारे ही जो भी एलिमेंटल ड्रैगन है वही है सबसे ताकतवर नहीं है ना क्योंकि उन लोगों की पावर निकाल के आर्कॉन्स को दे दी गई थी अब आर्कॉन ने अथॉरिटी दे दी ना पूरी जो है उसकी तो वो पूरा हाइड्रो ड्रैगन बन चुका है पूरी तरीके से क्या ही लेकिन प्लानिंग की थी उसने यार लाइक लिटरली अनेक तक नहीं लगी मतलब यही था कि वो प्रोफेसी गलत नहीं हो सकती तो प्रोफेसी को पूरा होना ही था बस पूरा होना था लेकिन बस वही चीज था कि उसने मतलब कोशिश की कि लोग ही चेंज हो जाएं अगर लोग डिसॉल्व ही नहीं हो सकते तो प्रोफेसी पूरी हो भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना वही चीज था कि उसने हाइड्रो ड्रैगन को दे दिया अब हाइड्रो ड्रैगन को चूज करना था कि वो मतलब उनको पूरा इंसान बनाता है कि नहीं तो इसीलिए वो 500 सालों से जज था तो फिर उसने आखिर में बना दिया सबको पूरा इंसान और फिर उसके बाद प्राइमोर्डियल सी वाटर आए ना आए कोई फर्क ही नहीं पड़ता जस्ट तो था ऊपर से क्या बोलते हैं किसी आर्गन को सीधा मारने का तरीका भी तो नहीं था वही कर रही थी वो इकट्ठा वो बनाने के लिए मारने का Thank you for your words of comfort. बता भाई खुद के लिए ऐसे फालतू लोगों के लिए खुद को मरा दिया But for now, at least, I think I should stay with the way I'm feeling for a while longer. It's okay. These things take time. Moving on from a painful experience is easier said than done, which brings me to why I'm here. I thought you should probably know that not everyone here is ready to forgive and forget after the Hydro Archon's inaction in the face of catastrophe. To avoid upsetting the peace, I told the townspeople that everyone here is a member of the डिप्रेस कर दिया है and that you are just an actress playing. ज़्यादा डिप्रेस कर दिया आर्कन को It's इसने not a perfect solution, but hopefully it means you won't have to lie low while you're here. That's so thoughtful of you, Navia. Well, what do you expect? I am the courageous and considerate president of Spina di Rosula, after all. Like my father before me. Anyway, that was all. Look after her now. Off we go then. Let's take a look up there. I don't have any friends that I can be frank and honest with. So maybe she's right. You're the closest thing to friends that I have.
am so grateful that Miss Navia was so understanding. To be perfectly honest, I didn't know if I was ready to meet her. It's always easiest to just run away from your problems. But that never fixes anything. You can't get around the obstacles without facing them. So that's why you were nervous when they brought up Poisson. Yeah. I'd be lying if I said I wasn't scared of coming back here. Still, I felt it was something I had to do. As I was saying before, I want to see for myself the things that I never could in the past. I'd be overjoyed if the people here could find it in their hearts to forgive me. But they're more likely to unleash a tirade of vitriol against me, which, of course, I completely understand and accept. Yeah, I can tell people are watching me. I'm sure some people here see the idea of someone coming to Poisson dressed as the Hydro Archon as extremely disrespectful. I used to be terrified of the gaze of other people, especially when they had suspicion or resentment in their eyes. I guess I wasn't quite ready for this after all. I'm not surprised you're making yourself go through all of this. I can't let myself see only the things I want to see. How would that make me any different from before? Look! There seems to be a crowd gathering over there. Probably time we made a move. How about we check out Spina di Rasula's ship? We should have a view of the whole of Poisson from there. बस विजन है ना? हाँ विजन है। उसके यानी हाइड्रो विजन मिलता है। क्या चीज? फरीना को हाइड्रो विजन मिलता है। बस एक आम 5 स्टार बन गई है यार वो तो। लेकिन हाइड्रो विजन तो मिलेगा ही उसको। उसके पास विजन है अगर तुम उसमें देखो तो कैरेक्टर में। I'm sorry. You probably just wanted a relaxing stroll. And here I am dumping all this heavy stuff on you. We don't mind. It's actually refreshing to see a different side of you. Great. Well, I appreciate your company, so please don't disappear just yet. I don't know whether you can tell, but the years of suffering and loneliness aren't the only reason I have a hard time facing up to who I used to be. As I stand here by the ship, I can't get the images of the rising water out of my mind. One after another, people were taken by the water. All those treasured lives and memories washed out of existence in an instant. They thought their god would protect them. They had absolute faith that when disaster struck, a divine power would save them from harm. And all the while, I played my part to perfection to convince them that was true. But then the floodwaters finally came, and the Hydro Archon did nothing. You shouldn't look at it like that. You were only doing your duty. I've had to go through so many moments like that for the sake of protecting the truth. As time went on, it got harder and harder to bear. And I became more lonely and isolated. Eventually, I realized I had nothing left except the truth. I became terrified of completely failing in my task, and was haunted by the thought of being left all alone, weeping on my throne. Fortunately, we were able to avoid the worst-case scenario thanks to the help of heroic individuals such as yourselves. Everyone rose to their responsibilities, and I finally regained my freedom. But on some level, freedom also means no longer being needed. I have no further use to people. I would have never imagined you'd see it that way. Reward? I guess so. Back then, I didn't even dare to dream about having someone to confide in. I was scared of someone recognizing me for who I truly was.
and exposing the secret I swore to protect. Believe in the Furina you see on stage. She is the one you can trust. I had to keep all my feelings, all my curiosity about life to myself. No one could be allowed to know. That's what I really meant when I said I'm no good at maintaining relationships. So that's where you were coming from. Paimon totally thought you were just a bit of a diva at heart. Could you please get off my case? I don't know what's gotten into you today. I'm making an effort here. You could at least try to do the same. I do. I once had nothing but the truth, and now I'm finally free to live my own life again. And even though I have no idea where I'm going Captain right now, Hope. at least the choice is in my hands. All right. Hello, it's Captain about Hope. time to head back. Paulo should have finished the ending by now. Sure. Okay, let's head back and check it out. कैप्टन होप देखा कि नहीं आपने? नहीं। अभिषेक भैया क्या हुआ? अभिषेक रूट्स ऑफ वॉर टीम एक कैप्टन होप। अरे तो तुम लोग क्या मतलब दिवाली के दिन भी खेलोगे क्या? Didn't you say अरे you मैंने wanted मना to किया तो watch समझा me कि वो डाल दिया मेरे को और यार। होप that तुम you're supposed to be cutting down on fried foods? कितने बजे है? 7 बजे है ना? साढ़े तो साढ़े 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 सात सात पर है ना? You know? तो लेकिन कौन दिवाली सा के ही दिन है। तो उस टाइम में करोगे क्या? पटाखे मैंने फोड़ने है नहीं। तो भी भाई घर का काम होता है कराने के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी तो टाइम बिताना तो होता है। पहले बिल्कुल। निपटा लेंगे सब कुछ। क्या निपटा लोगे? देखो तुम बीच में खेलने बैठोगे क्या गेम? तो फैमिली कौन सा यहाँ आ और रहा है कोई बीटी, इस टाइम? वो बीटी भी है पता है उसमें। बीटीवी है सबसे उसमें मैं बोलूंगा मैं निकल के जरा बीटीवी को डालूंगा। होप मैं नहीं आऊंगा तो इसको ले लोगे ना? मेरे को क्या मालूम, मेरे को कैप्टन क्यों बनवा दिया? क्या? अरे मुझे जिनसी Come on. जो ये It's not बहुत every सब्सिडी girl से who बहुत gets सारे to dine सब्सिडी at से बहुत Spina सारे di लोग हैं। ये Rosula's किसी को उठा expense. ली है उस टाइम। Can you believe how generous she सब्स्टिट्यूट is? का मुझे नहीं मालूम, not पर about to pass कैप्टनशिप on किसने दिलवाई है मेरे को जरा बताएगा कोई? Anyway, तेरा ही जिसने काम वो लग रहा जिसने है वो मेरे को। डाला है This उसने living good कैप्टनसी looking. दिलवाई होगी, और कौन That's your दिलवाएगा? job. मैं आता हूँ ठीक है। ये बीट Are you पीछे kidding बोल me दिया right होगा। now? It's not your character's health I'm worried about, it's yours. जो I've भाग spent रहा my है। whole life battling the effects of ill health. क्या हो गया? And कुछ it बोल रहे kills हो me क्या? to watch you willingly ruin एक तो yours ये तो by पता होप filling हमेशा yourself रोज का up हो with गया है। junk जब all भी the time. आप कोई अपने अपना टीम का कैप्टन बनता है ना, Arguing again. कभी अपनी टीम में टी5 नहीं होता। चेक करो इस बार कोई टी5 नहीं है अपनी टीम में। We're back. Could you maybe put your differences aside for a moment? आओ। Ah, you're back. हाँ। We've been enjoying Spina di Rosula's अपने में कोई VIP T5 नहीं treatment है। in your stead. Paulo's nearly done. We shouldn't have to wait too तो much देख longer. लीजिए। So you were discussing your characters, right? We heard she's playing the Oceanid who turns into a human girl. What about you? Me? I'm an Oceanid too. He was originally supposed to take the form of a crane, but he outgrew that role. Well, the costume at least. So now he's playing the boar instead. Sorry. The boar's not a bad character, actually. He's the one who raises the little Oceanid, yes? That's right. He has some pretty memorable lines too. Like when he imparts some solemn words of wisdom to the little Oceanid. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Wait, that sounds kind of familiar. It's the most important line in the whole script. I think it's a symbolic statement about our director's life and legacy. She kept quiet about all the trials and tribulations she faced in running our troupe, allowing us to devote ourselves fully to performing. It was only after she was gone that we realized how tough her job really was. You mentioned earlier that the troupe is like your home. Yeah. I was born with an incurable illness, and once my family found out it couldn't be treated, they decided they didn't want me anymore. I spent some years taking whatever work I could find and trying to manage my illness with various medicines. But whenever I had a bad flare-up, I'd be lying in an alleyway for days at a time. It was like that until the director found me one day. She told me I had a great voice and asked if I was interested in studying singing from her. I said yes.
She took me under her wing. आप बता क्या Taught me बोल to रहा था? both sing and act. हम्म Helped me find मैं more बोल for रहा my था meds. Took care of me when लास्ट my उल्टा वाले में condition ये होता decided है to वो flare आईडी में up. कोई R35 नहीं था, इस बार भी वही हुआ है, कोई T5 नहीं I है know टीम it में। was all a तो huge भाई टीम burden on करती her. क्या है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं तो रैंडम भागने वालों में से She हूँ। really was. नहीं देखो, She gave everything she रैंडम had नहीं जैसा भागना है, and सबके the पास अपना people in it. ऑब्जेक्टिव है, वो करना है। All of us were होप so जैसा worried अपन है ना, about our तो director. जैसा अपन है ना, I अपने was a जो lost साइड होगा child उससे too, डिका she डिका found भी me. रहेगा, डिका डिका की टीम भी I अपने was the साइड ही रहती child है। of a murderer. तो भाई कुछ नहीं करना है, डिका My को फॉलो parents करना weren't है, around when I was little. ठीक है? So I got बस sent to an लास्ट टाइम तो orphanage. हमने The यही other किया। kids were always picking fights with me. डिका की टीम में They'd ग्रिस्लॉफ है, say ग्रिस्लॉफ things like, T5 पता है ना वो? "Come on, you must be pretty tough उसकी if you're the son बस of a उसके पीछे चलते murderer." जाइए, जहाँ वो जाए आप चले जाइए It was बस, just to खत्म। taunt me, though. I was an easy target, and they one day I आपको got पता ना, beaten up so आपको bad रूट्स ऑफ mother होता है ना, just couldn't तीन take तीन it साइडें anymore. होती हैं, So I ran वो away. सब तो पता है। I तो lost all faith in टीम ए humanity और by बी that लेफ्ट साइड से point. नीचे नीचे की ओर Thought जाती the है, whole टीम world was out to बी get me. बीच सी बीच में से जाती है और डी और ई ऊपर जाती है। Fortunately, the next person you ran into तो was अपना काम the रहता है नीचे के दो, Yeah, नीचे से एकदम for the first उनको time in पुश my कर करके, जो life, उनका मेन टावर है I ना was बीच में जो रहता है somewhere I एकदम felt सेंटर पे, safe. वो आप उनको And गिरा I देना है। promised myself I'd stay प्रेशर हो, here until the day ऐसा the है group आपका मेनली। parted ways. The day you hoped would never come. How times change. Oh, you're finally done? Get your butt over here. There's someone I need to introduce you to. This is our new artistic consultant, Miss Furina. Furina? The Furina? Oh my god, how did you manage to wrangle that? Please. अरे होप को भी सुनाते हैं वो, होप। I was profoundly moved तो by मैंने your troupe एक and काजू your के नाम का wonderful बंदा है, director. नहीं I है तो just आर wanted फॉर to यू do का something to help. है, पता नहीं होगा शायद। Even मैं उसको so, बोलता this is हाँ, just... पुट दिस रोड टू अपग्रेड, Wow, वो I'm थम्स अप sorry. भेजता। I'll try to calm down. फिर पैथफाइंडर मैसेज करता, यू Where कैन was I? आल्सो आस्क मी Yes, the पोलाइटली script, एंड of नॉट टेल मी course. व्हाट टू डू, Let me give you a लाइक rundown of प्लीज how the सर story कैन यू अपग्रेड unfolds दिस in रोड, my आई एम नॉट version of योर the आई एम नॉट योर script. I'm डॉग। sure you're already familiar with the क्या beginning बोला of the समझा story. नहीं। A little Oceanid मैंने मैसेज decides किया she कि ये रोड wants to अपग्रेड become लगा a दो, human ठीक है? against the wishes of her पुट family. दिस She रोड finds अपग्रेड, ये love and एग्जैक्ट लाइन लिखी friendship in मैंने। the bustling city. थोड़ी देर में मैसेज करता But है, then, यू कैन आल्सो आस्क मी disaster पोलाइटली strikes, एंड and नॉट people टू टेल start मी to व्हाट टू notice डू, that all the fresh water in the लाइक प्लीज surrounding सर area is कैन यू अपग्रेड slowly दिस रोड, disappearing. आई एम नॉट योर The डॉग, soil is becoming arid. Plants you and know, flowers ऐसा are लिखा। withering, and the people अच्छी begin to बात है बोल panic. तो। The little Oceanid, Hmm? Cleo, and her क्या हो? lover decide to do something about it and investigate the एक truth of the सेकंड matter जरा फोन आ together. रहा है। In the end, they discover that all the waste and pollution created by humans over the years has caused the fresh water to flee the land, as if driven by a consciousness of its own. Consciousness? You mean the water is sentient? Water as a conscious entity. There's actually quite a few stories that explore this theme. Since the little Oceanid is a water spirit, she immediately understands how the water is feeling. She then tells her lover about her true identity, as well as the truth behind the crisis. Her lover accepts her for who she is, and works with her to find a way to bring the water back. However, unbeknownst to them, there were some people eavesdropping when she revealed her secret. The little Oceanid is accused of being directly responsible for driving the water away, and faces the greatest dilemma of her life. And then? In the end, she makes the brave decision to sacrifice herself to save her lover and the rest of humanity. Huh? But didn't they all treat Cleo like a villain? Why would she want to save them after that? Well, she mainly wanted to save her lover, plus everyone who'd stood up for her. Through her love for her human partner, she was able to find an even greater love, one that extended to all of humanity. Surely the biggest strength of Cleo's character. There's actually something else that bothers me. You know the protagonist is supposed to represent the director, right? And she never had the chance to become a hero in our world. If we're serious about dedicating this show to her memory, we should make the ending as true to life as possible. What about if the little Oceanid is hounded to death by people who hate her, her lover makes sure her secret never gets out, and humanity continues down the path to extinction? That sounds like too cruel of an ending to me. And perhaps a little irresponsible to present to the audience. That ending would be a perfect mirror to Director Aureli's death, both arbitrary and meaningless. On the day when she went missing, Director Aureli had instructed us all, somewhat out of the blue, to leave the court of Fontaine and wait for her outside the city. We waited and waited at the rendezvous point, but she never came.
By the time we returned to the city, she disappeared without a trace. We looked for her. The Gardamex looked for her, but she was nowhere to be found. Increasingly, all the signs seemed to point to her being the latest victim in the serial disappearances case. The director was the kindest soul in the world. Yet she was senselessly sacrificed for the sake of a so-called experiment by someone who had nothing to do with her at all. But doesn't the way she suddenly told you to leave the city suggest that maybe she had some sense of what was about to happen? It almost seems as if she was moving you to safety. I've been trying to follow up on that ever since, but all my efforts so far have turned up मुझे वो nothing. 3 forts मारने हैं. Villemont might know something, but he won't open up to me. Villemont? The one who's playing the role of the villain? Yeah. He's been overwhelmed by grief. I think the director's death hit him hardest of all. Grief? Guilt, more like. Also, I have a hard time imagining that anyone took it harder than me, because... Well, speaking of the play being true to life, I was deeply, madly in love with Aurelie. What? You kept that one quiet. It's time to be upfront with you all. No more keeping secrets from each other. We'll never be able to agree on the ending if we can't be honest about how we feel. I did tell her how I felt once, but she turned me down pretty much straight away. She said that we were all like brothers and sisters to her, and she never considered us as potential romantic partners. Not that it came as a shock or anything. It was what I was expecting to hear. So I told her I'd always be there for the troupe, and I'd always be there for her. I said, maybe one day in the future, when everyone's settled into their own lives and on the up and up, and managing the troupe no longer required her constant attention, well, maybe then she could reconsider what she really wanted in her life. And now, that day will never come. Oh, Paulo. So if I'm the one writing this ending, then I'm gonna make sure it does right by Aurelie. I won't let anyone get in the way of that. In that case, you have to straighten things out with Villemont once and for all, face to face. We've all had our differences of opinion over the ending, but those two have never seen eye to eye on anything. One of them has to compromise if we're ever going to reach a final decision. Well, if that's where we're at, looks like it's time to go visit Villemont. Are you ready to face the truth? Honestly, I'm slightly terrified. But for the sake of our final performance, I'll do whatever it takes. Funny you should ask, though. You really do get what I'm going through right now. I certainly do. Come on, everyone. Allons-y!
a roadblock. Don't worry. We should all be fine with the traveler here. We don't need to take a detour. Wait, why are you all looking at me? You're not seriously expecting me to fight, are you? We're just curious, that's all. I don't think anyone's ever seen Furina in a fight before. Yeah, but don't you remember why? The Hydro Archon willingly gave up all her power so it could be converted into indemnitium. Miss Furina said so herself. Precisely. And I'm not even the Hydro Archon anymore, so all my power is gone anyway. As much as it pains me, unfortunately, I should just stay put. I'm more like a damsel in distress more than anything. That sounded so smug. Ugh, secondhand embarrassment is unbearable. C'est la vie indeed. Alas, I am forced to watch on helplessly as a more brave and seasoned adventurer than I swoops in to save the day. Aw, too bad. I was so pumped to feast my eyes on fight mode Furina. Sorry to leave all the heavy lifting to you. Don't worry, piece of cake. Gather! May I protect you, see? I will have order. Bow your head. Solidify! The show begins! A bitter pill to swallow. Yeah, seems like an emergency. Silence! Ah. Gather! Bravo! Good show! You certainly live up to your reputation. Yeah, thank you. Anyway, the path is cleared now, so onwards and upwards. Vilma, are you there? Huh? Oh, it's you guys. Wait, what's Lady Furina doing here? I can explain. We've been rounding up the whole troop. We now have everyone except you. So, you think knowing the truth about the director's disappearance will help you write an ending to the script that pleases everyone? I care just as much as everyone else about making the Little Oceanid a success. That's why I wanted to wait until after the show. If I open this can of worms now, I just don't want to make things difficult between us. We're supposed to be a unit when we're on stage. Vilma, avoiding the truth will not help anyone. Unless you mean to suggest that Aurelie's death had something to do with you. I don't want to talk about it. Listen, Vilma. I used to think that my love for Aurelie was a point of shame. I never brought it up to anyone. But now, I've made up my mind to put it all on the table. I'm prepared to face everything, to sacrifice everything for the sake of the show. The Little Oceanid cannot be complete unless we do justice to Aurelie on an emotional level. This is why people think of you as not being the smart one. As you all know already, the troupe was kept afloat not from ticket sales, but donations from the audience. Of course, that was nowhere near enough. We took on side jobs when we weren't performing, but even then, the troupe's financial situation was pretty dire. So, anyway, one day after a show, a merchant came to me and offered us a huge sponsorship. In return, we just had to provide the audience with their drinks during performances. It seemed like a win-win, so I said yes to it on the spot without consulting the director. It was only when the merchant came to deliver the goods that I realized the drink in question was synth. Isn't that the drink peddled by the culprit behind the serial disappearances case?
I freaked out when I saw the boxes. And I told the director everything right away. She was completely shocked as well. But she didn't reprimand me for making the decision without consulting her. Instead, she contacted the merchant and stated that the troupe could not agree to this collaboration. The merchant was furious, berated us for going back on our word, and threatened to sue us for damages. The amount was astronomical. There was no way we'd be able to pay. I was going to sort it on my own, but the director stopped me. She said that this was an issue for the whole troupe and it wasn't my fault. But things only got worse from there. The synth merchant just wouldn't let up, and then suddenly the director told us all to leave the city one day. I knew then that things must have reached a boiling point. I admit this whole thing was my mistake. I didn't dare to tell any of you the truth back then, and after the director disappeared, I was even more afraid to say anything. Yeah, I got Aurelie killed. There, I said it. Happy now? Hey, don't say that. You traitor! You knew Aurelie was in danger. Why in God's name didn't you tell us? What do you mean? You were afraid? This was a life and death situation. We could have saved her. How could you be so stupid? Please, try not to get too worked up. Yeah, listen to him. You need to stay calm. Stay calm? How can I stay calm? This guy got Aurelie murdered. She was the love of my life. And he has the gall to try and high-road us, claiming that he kept his mouth shut for the sake of the show. How about taking some responsibility for what he's done? All I can say is I'm sorry. Truly. I wanted to apologize to everyone in the troupe, but that won't bring back the director. What good is my apology now? I'm just a coward who made an awful, terrible mistake that I can never take back. Beat me up if you want. Kill me if you prefer. It's what I deserve. End my life. So I can meet the director and apologize to her in person. Get out of my sight. Go, get lost. I don't ever want to see your face again. That's enough! You've screamed and shouted at each other for long enough. Now pipe down, both of you! Can you stop conflating the show on stage with your real-life relationships in the troupe? You keep saying that you want to use this final performance to pay tribute to your director and celebrate her life. How can you do that if you're just using it as an excuse to vent your own emotions? You're right. I'm sorry. On stage, the lead role is the focal point of the audience's attention. And you're all used to seeing the director as the heart of the troupe. But in her own life, her greatest desire wasn't to be the center of attention. I can tell how much she loved you all, and how much she loved the troupe. What she wanted was to build a warm home for all of her brothers and sisters. To shield you all from the storms that rage in the world outside. That's how you should remember her. And that's what you should be celebrating. I understand why you're trying to make her the hero of the story, but isn't she your hero already? After everything she did for you? Yeah. So think hard about what that means. And then think again about what you hope to achieve by arguing with each other. If you really hate each other and can't reconcile your differences, then you could just call it quits now. Why bother with the final performance if the group is already fractured? But you can't bring yourself to do that, can you? Hope. You care too much about Director Aurelie and the home she built you all to live Hello, in. Hope. What are you laughing at? Hope, hello. I don't see what's so funny. Sorry, I didn't mean it that way. It's just अरे that पर वो ROW में उसका नाम आ गया सोमा का। अरे सोमा छोड़ो, होप कप्तान है। हाँ, अरे होप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, होप बोल रहे हैं। हाँ तो ठीक है। बस बाकी सोमा का ही है। सोमा ने बोला कि उसने बोला था उससे, लेकिन फिर भी उसका नाम डाल दिया। हाँ तो सोमा तो हट जाएगा, लेकिन मुझे पक्का पता है जब सोमा हटेगा तो अगला नाम किसका डलेगा। ठीक है। Really? बीटी को भी नहीं पता है क्या कि दिवाली के दिन है? Gentle
person. क्या पता भाई Of course she was. 14 यूटीसी एक तो Even बहुत her जल्दी होता है harshest ना lectures 14 came from यूटीसी a place कितना of kindness, साढ़े and it साढ़े showed. सात होता है साढ़े She सात पे तो really भाई was a दिवाली के truly दिन बिजी रहते ही outstanding रहते हैं person. शाम को मैंने होप से बोला तो होप बोला कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मतलब क्या करेगा ही, तो इसलिए वो खेलेगा बोल रहा है। हाँ वो अगर प्रॉब्लम होगी फिर What you said, वो it क्या म्यूट करके अगर really बोल रहा puts होगा everything तो into फिर कुछ perspective. ये आया ना, आवाज तो आई है होप की अभी। नहीं होप तो म्यूट है, ये आवाज जो आई है ये उसकी आई है जिसके पास फिरेना नहीं है। genuine apology, but कौन सोमा? I ended up making it all यार मैं तो about असली me. भगवान निकालूंगा, Self-pity. इंसान नहीं चाहिए। बेटा जो It's all जो है right. हाथ में वो निकाल लो। Let's save all this for after the performance. निकालूंगा के चक्कर में ना ये रहेगा ना कुछ और। What are we gonna do about it? Clearly, everyone needs to take a step फुरीना back for now and reflect on 100% what पिटी है, really 20 या 30 matters. विशेष इकट्ठी When करो और बस emotions are सीधा running विशेष high, कर दो। things get lost in the fray. The end of the story needs to focus विशेष back नहीं on मिलती Aurelia क्या है भाई? herself. She's the true एक्सप्लोर एक star दिन करो पूरा of the एक्सप्लोर show. कर दिया। वर्ल्ड क्वेस्ट करो भाई, What do you वर्ल्ड क्वेस्ट कर लो। The traveler is right. You once मेरा investigated वर्ल्ड क्वेस्ट that से लगा अभिषेक underwater भाई बताओ तो यार surface उस एरिया and खोलने में कौन recovered सा वर्ल्ड items क्वेस्ट करना है? belonging to the victims. अरे रूट्स ऑफ वॉर टीम है कैप्टन होप कहाँ है? सारे If you could सारे find वर्ल्ड क्वेस्ट कर anything लो that भाई तुम, Aurelia मैं तो left बोल रहा हूँ behind, तुम्हें विशेष निकालो वर्ल्ड क्वेस्ट से। perhaps we can get a better ये sense ले of जाओ what she went लैपटॉप। through in her final days. You really think that's possible? तो मैं एक्सप्लोर कर लूँ बैठ के पूरा। Nobody would हाँ object तो to the लैपटॉप ले ending of जाओ, the story being based on एक्सप्लोर करो Aurelia's लेकिन true वर्ल्ड क्वेस्ट के feelings. साथ एक्सप्लोर करो। Well, वर्ल्ड क्वेस्ट तुम्हें वो we'll leave पर्टिकुलर this रीजन in में the बार बार ले capable जाना है hands. वैसे ही। Come, let's pay a visit to अब the Palais एक रीजन तो Mammalia. 88 के ऊपर The हो भी rest रहा, of you, वर्ल्ड क्वेस्ट करने head back पड़ेंगे to the उसके लिए, rehearsal location for तो now वेट करना and पड़ेगा। wait for our good news. रुको कौन गया ये? होप यार, होप को रूट्स ऑफ वॉर कैप्टन बनाया, होप से पूछना था मेरे को। ओके तो मेरा नाम क्यों डाल दिया उन्होंने, समझ में नहीं आ रहा। तूने किसको मैसेज किया था? नेज़ा को अभी फिर कर दे। मैंने बोला कि मेरा इन गेम में रिक्वायर ट्रीट करो भाई, मतलब मैसेज डिस्कॉर्ड में मैसेज किया था मैंने। You want to review some recovered items connected to तो victims देखा of नहीं the serial disappearance ठीक है, case. अच्छा But that case has been चलो। closed for quite a while now. Still, since you were the ones who discovered and submitted the evidence in the first place, you और don't बढ़ता actually क्या है? have to submit an application. Okay, please hold अच्छा on. I'll have someone dig them out. So, this is all Aurelie left 3 behind. फोर्ट्स मारने मेरे को। Just whatever मेरा she was carrying खत्म on ये। her person and this tattered old notebook. Hey, it's full of script lines and sketches too. Looks like they show where the different props should be placed on stage. Let me take a look. Maybe there's something अभिषेक missing आपने from किया? after she was kidnapped. फुरीना का स्टोरी Aha, पे। कर रहा I हूँ। found something. अच्छा To कितना लंबा बड़ा है क्या? whoever discovers this diary, अलग तो रहा है। let's see, नाम it क्या है looks वैसे? like she kept a क्या detailed चीज़? record of her captor's क्वेस्ट actions. लिटिल ओशन है She ना? even mentions हाँ the वही truth नाम है। behind the experiments on dissolving young women. If we'd had the chance to examine this मैंने कल notebook रात में carefully स्टार्ट कर back दिया फिर then, मैं सो गया it था। would have been a conclusive piece of evidence proving Vacher's guilt. Vache मेरे took को तो so रिक्वेस्ट many करके ही नींद lives. आती है यार, कितने बड़े It's just क्वेस्ट so हैं। unthinkable how many victims he had. I guess Aurelie must have written all of this down in the hope that her records would one day be of use to investigators. Wait, it cuts off. Her handwriting here gets patchier and more illegible by the line. She probably didn't have much strength left. Her final words are... I'll let you read them for yourselves.
She was so terrified. She may have been a mighty hero in the eyes of her troop, but at the end of the day, she was only human. I can't bear to think how painful and lonely her final days must have been. Wait. This part on the last page sounds strangely familiar. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this still what you want? Isn't that the most important line in the Little Oceanid? Because I am an older sister to them. Oh. So she didn't regret her decision. Even as she sat in silence, waiting for death to come. I'm sure this is what the troop would have hoped to hear as नया इवेंट आया well. है? She had their utmost trust, फ्री admiration, चलो and love. And she truly deserved it. Let's go. It's time for them to learn Director O'Reilly's final thoughts. ज़्यादा बोल रही है। इसमें न्यू लेडीज करने भी दिया जा रहा है। ज़्यादा बोल रही है। मारो 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 मारो। हेलो चलो। मैंने फुरीना को हाइड्रो डैमेज बोनस की जगह पे एचपी परसेंटेज का गॉबलेट दे दिया है। क्यों? अच्छा है क्या उसका? उसका टैलेंट मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है उसके साथ, क्योंकि चल रहा है ना। मैं ऑनलाइन में चेक कर लेता हूँ क्या क्या दे रहे हैं। आर्टिफैक्ट स्टैट्स क्योंकि 40,000 एचपी तक का बफ देगी, और 40,000 एचपी बिना 2 हाइड्रो क्या कहते हैं दिए काम घूमने की हो नहीं पाएगी किसी भी हालत में। यार ये मेरा अकाउंट कौन लॉगिन कर अच्छा लेता तुम है कर लियो यार? क्या लॉगिन? करो तुम करो, कर लो जल्दी फिर बताना। मैंने कहा हो ओ अभिषेक ऑनलाइन तो बोल रहे हैं कल वो भाई उसकी स्पॉटलाइट मैं ऑफ करने जा रहा हूँ, अपने लॉगिन कर लिया। फिर मैंने कहा साला वो इतनी क्रूशियल मोमेंट चल रहा है, मेरे को जानना है स्टोरी कैसे चल रही है। और वो भाई मैं तुरंत खट 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 टैप करे जा रहा हूँ कि जल्दी लॉगिन, तो जल्दी वापस लॉग मेरा। और एग्जैक्ट टाइम पर लॉगिन ठीक है। टीम है लिली और लेने का काम सिर्फ आसपास के पेड़ पौधे ढूंढने मारने का है। भाई बिना 4 के तो उसका कोई डैमेज ही नहीं आता है। मैं तो पूरा मेल्ट के लिए इसको रख देता हूँ, उसकी टोपी छोड़ दो, गाने से मरते रहो। चुमा कुछ खाने की व्यवस्था करी जाए। क्या चाहिए अपन को? दाल रखी होगी, चावल के हैं तो आंटी को बोल दो वो चावल फ्राई कर देना, दाल चावल और मेरे लिए भी ले आओ। चावल फ्राई करके दाल चावल। हाँ जाओ अरे भाई अच्छा दोनों ही वो बराबर बता रहे हैं क्या? तो आपकी साइड डिफरेंट है, दोनों ही अच्छे हैं, हाइड्रो भी और वो भी।
मेरे हिसाब से एचपी वाला फिर भी ज्यादा ठीक रहेगा। देखो लगता है एचपी कितनी हो जा क्योंकि रही है देखो उसकी। एचपी का देखो एक फायदा और एक्स्ट्रा 20 रहेगा, तुम्हें जो हील मिलेगा ना उसका इंटरवल कम रहेगा। मतलब इंटरवल्स में कि जो इंटरवल नहीं रहते हैं तो वो कितने इंटरवल पे हील मिलेगा, हील तो चाहिए ही चाहिए। तो वो कम होगा तुम्हारा, ठीक है ना, एचपी से होने से ज्यादा होने से। और वही ना कि आपने 40,000 एक्सपी तक अल्टीमेट यूज तुम्हारा पूरा करी और जाएगा। आपको हील 100% चाहिए। तो ना बेनेट जैसे एक तरह से। और अगर तुम्हारी तगड़ी एचपी है ज्यादा काफी। होगी ना तो वो तुम्हारा डैमेज भी हम्म। ज्यादा देंगे, क्या बोलते हैं। अरे वो एचपी ज्यादा ले लेती है यार फालतू, आधी आधी एचपी दिखने लगती है मेरे को, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। आधी से भी कम एचपी हो जाती है कैरेक्टर्स की। कोकोमी यूज करूंगा मैं तो भाई। वो तो हर एक कैरेक्टर ऐसा लग रहा है गेम में, ये मतलब फॉन्टेन जितना है सब एचपी ही लेते हैं। हाँ फॉन्टेन में जितना है सब एचपी ही लेते हैं मेरे ख्याल से। है तो वो लिनेट नहीं कोकोमी लेती है शायद। चीची चीची बढ़िया रहेगी। हम्म। जैसे अगर अपन न्यूबलेट, फ्यूरिना, चीची। नहीं लेकिन जितने भी कैरेक्टर आए हैं फॉन्टेनो जैसे वो एचपी लेते भी हैं तो वो दे भी देते हैं, वैसा मेरे टाइप हिसाब से से है। ओपन वर्ल्ड की टीम तो बन गई। बाकी अभी क्या रहता था लिनी जो है वो टट्टी है थोड़ा सा, क्योंकि लिनी में क्या है कि जब तक उसकी एचपी जाएगी नहीं, खुद उसके 4 अटैक्स है, तब तक उसकी एचपी आ नहीं सकती खुद से। वो कैरेक्टर ही टट्टी है भाई, हर रीजन क्योंकि के देखो फर्स्ट लिनी जब 4 कैरेक्टर अटैक में। करता है और उसको स्टैक तभी मिलता है जब उसके 4 अटैक में एचपी खत्म होती है, और जितनी भाई एचपी खत्म रीजन होती के है वो पहले उतनी ही रीजन कैरेक्टर्स के करेगा। हिसाब से एकदम ही टट्टी है भाई। तुम उसमें देखो, सुमेरु में भी टट्टी आया था टिग्नारी, वो तो छोड़ दो तुम। वहां देखो इनाजुमा में वो आई थी अयाका। नहीं अयाका कहाँ पहले आई थी? पहला मैंने था यार इनोमा का। पहला अयाका ही है ना। लेकिन पहला मेन कैरेक्टर अयाका चलो था। काजुआ था, अब वही देख लो। नहीं मेरे को काजुआ पास तो मॉन्स्टार्ट का कहलाएगा, मतलब नहीं मॉन्स्टार्ट नहीं लियोए का लियो में कहलाता है। पर अगर उस रीजन का फर्स्ट देखे तो भी अयाका या काजुआ दोनों ही देख लो, बराबर ही है। क्या अयाका अच्छी नहीं है क्या? अरे बहुत बढ़िया है भाई तो, लेकिन अयाका के कंपैरिजन में ये टिग्नारी और लिनी बताओ तुम। फिर लिनी कल का रात बस मेरे वही को एक कोई चीज आइडिया खराब है दे रहा कि है कि बिना वो साला मतलब कि जैसा अगर उसकी पहले से अगर उसकी एचपी कम है तो तुम उसकी एचपी बढ़ा नहीं सकते हो खुद से, मतलब कि उसके वो लिनी से तुमको किसी हीलर की जरूरत है, ऐसा टाइप का है लिनी। बाकी कोई दूसरा कैरेक्टर ऐसा टाइप का नहीं है, ठीक है ना। बाकी तुम उसको न्यूबलेट को देख लो, वो तो जब भी ई करेगा या फिर क्यू करेगा एनिमी पे तो वो आराम से अपनी एचपी फुल कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और रियोसली भी वैसा ही है, जब भी वो क्या कहते हैं 4 शॉट करेगा तो उसकी एचपी हील होती है। बस अकेला यही है जो है ये लिनी, जो अपनी एचपी रीजन नहीं कर सकता अगर इसने अपनी एचपी मतलब कि खुद ही नहीं खत्म करी है तो, और उसी टाइम पे नहीं खत्म करी है तो। पहले खत्म करी और बाद में रीजन करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं हो सकता। तो वो चीजें प्रॉब्लम है थोड़ा सा लेने के साथ। और बाकी उसका डैमेज की प्रॉब्लम है कि वो 3 स्टैक नहीं जा सकता कभी। जैसे वो नहीं है जो मतलब कि सेट जो है वो 3 स्टैक तक लेके जाता है, लेकिन लिनी 3 स्टैक तक जा नहीं सकता, क्योंकि लिनी सिर्फ लेकिन लिनी की 60% से नीचे एचपी हो नहीं सकती, और हर एक 4 शॉट उसका 20% एचपी लेता है। तो यानी वो 2 बार मारेगा, यानी कि 2 स्टैक उसको मिल जाएंगे, फिर उसको स्टैक नहीं मिलेंगे आगे। नहीं तो एचपी चेंज होने पे मिलता है, लेकिन फिर उसे ई करना पड़ेगा ना, फिर वो 16 सेकंड का फिर वेट है उसका, और स्टैक से 6 सेकंड के लिए होते हैं। अगर अपन ने चीची यूज करी हाँ तब हो सकता है, मतलब खुद से नहीं कर सकता 3 स्टैक ये बोल। ठीक बाकी ये दूसरा कैरेक्टर चाहिए होगा उसका बढ़ाने के लिए, अगर हीलर कोई। समझ गया। बाकी जैसे बाकी जितने कैरेक्टर आए हैं वो सब अकेले कर सकते हैं, जैसे कि न्यूबलेट है वो अपने 4 शॉट में लगभग 5 से 6 बार एचपी अपनी कम करता है, तो वो तो 3 स्टैक तो उसके बहुत आराम से हो जाते हैं। सेम रियसली का भी है, जब भी वो नॉर्मल अटैक करेगा ई में तो उसकी एचपी कम होती है और वो धीरे धीरे कम होती है, तो मतलब वो स्टैक उसको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो सेम फुरीना का भी है, फुरीना तो मतलब हील भी कर सकती है वो, तो उसको तो कोई ज़रूरत भी नहीं है किसी चीज़ की, और बस अकेला लिनी ही है जो पूरा यूज़ नहीं कर सकता किसी चीज़ का। ये देखा क्या किसी ने? हैं? हेलो जय का है क्या? हाँ आवाज़ तो लगी मुझे वैसे। हाँ वही मैंने क्या आवाज़ लगी कि ये सोमा नहीं है बोल रहा। और बताओ जैकी क्या हाल चाल? Here comes the finale. Solidify.
Step right up. मेरी आईडी मेरा ही मोबाइल लॉगिन कर रहा है भाई। मेरे मोबाइल को शर्म नहीं आ रही मेरी आईडी लॉगिन करके। तुम्हें अभी क्रिट रेट का सर्कुलेट मिला पता है? और उसमें क्रिट डैमेज था। मैंने उसको अपग्रेड नहीं किया अभी तक, बस मिला है अभी अभी मारा मैंने तो उसको अभी अभी मिला। करो अपग्रेड करो, आग देगा मेरे को। ग्लैडिएटर का मिला है। कितने सारे ग्लैडिएटर के पड़े हैं भाई। स्पैरो गेमिंग। स्पैरो गेमिंग। स्पैरो 1.0.01। अरे भाई एचपी पे जा रहा है। अच्छा रीपर, तुम्हारा फुरीना का स्टैट्स क्या है? हम अरे तुम मेरी आईडी खोल के बैठे हो, तुम मेरे को पूछ रहे हो? अरे तुम मैं पगला अपग्रेड हो कर रहा हूँ क्या ना। थोड़े से? अरे भाई ये तो एचपी ही जाया जा रहा है भाई, जा ही नहीं रहा है किसी और चीज़ से। फुरीना पे वैसे दे सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर उसका क्रिट थोड़ा कम है तो। लेकिन बस ये क्रिट डैमेज रोल नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है थोड़ा सा ये देना। एक बार अटैक चला स्पैरो गया। गेमिंग का पासवर्ड भूल गया मैं भाई। फुरीना को वो नहीं किया है क्या? मैसेज किधर है फुरीना? मिल गया पासवर्ड। यहाँ से देखना पड़ेगा। इसको ये कर लेते हैं स्टार। 39 to 73 यार ये प्रॉब्लम है। 39 की रेट काफ़ी कम है। इसको अगर मैं एचपी दे दूं, गोल्डन प्रूफ में कोई एचपी है क्या ढंग की? विद्रोह है एचपी, हाँ ये है तो है एचपी बढ़ाने के लिए, और तो कोई है नहीं शायद। अरे हाँ एक है, उसमें क्रिटिकल के डैमेज दोनों है और 4 के चारों स्टैट्स हैं। एक अटैक है एक एचपी है। अटैक की जगह किसी पे भी जाएगा तो अच्छा रहेगा। पहला क्रिटिकल डैमेज पे गया, दूसरा किस पे गया? एचपी पे गया। हमारा 80 हो चुका है ना? रिटेट उसका बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? 80 के बाद ये भी तेरे पास है। असेंड का ऑप्शन दबा देख। हाँ अपग्रेड कर रहा हूँ मैं जरा एक आर्टिफैक्ट। मैं तो बच गया, मैंने मना कर दिया था। मैं तो बच गया। ये किस चीज़ में मना कर दिया था? ये रूट्स ऑफ वॉर में। ये साला नेजो जो है पक्के से वो है लल्ला, पेट्रियार्क। ये चेरी को कभी कैप्टन नहीं बनाता भाई आराम। इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी करंटली कितना है कंपेयर? अरे यार क्रिकेट और कम हो जाएगा। असेंड करने पे हाँ मिलेगा, ठीक है 5% क्रिट रेट और मिलेगा। 5% क्रिट रेट और मिलेगा तो भी नहीं हो पाएगा। वही तो मैं सोच रहा क्रिट रेट का ही सर्कुलेट देना पड़ेगा और मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन नहीं है और कोई है ही नहीं जिसमें क्रिट रेट ज़्यादा हो। सब में 2-2 3-3% क्रिट रेट है। यार लेवल 4 वीआईपी पे कहाँ अपन खरीद सकते हैं यार रिलोकेशन? लेवल 6 चाहिए उसके लिए। अब तो ये नहीं पता मुझे। अरे यार अभिषेक यार तुम दल्ले हो नंबर 750 जेम यूज करवा रहे हो तुम। अरे यार डिफेंस में मत जा भाई।
भाई एक पीछे से क्या ऑडियो देता रहता है भाई गेम। हाँ विषय बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ ढंग के आर्टिफैक्ट नहीं रोल हो रहे। लेट्स गो एलिमेंटल मास्टरी, बहुत बढ़िया। क्रिट चाहिए था, बहुत बढ़िया। यही देना पड़ेगा क्रिट को, और मैं क्या बताऊं, और कोई डैमेज फार्म भी करो नहीं ना, है जाओ भाई। दो राउंड फार्म तो करो। क्या ही बोला जाए भाई। चलो चलो चलो, मैं देख रहा हूँ अभी बढ़िया फार्म हो जाएगा जब मैं देख रहा हूँ तो। भगवान की स्टैचू भी छूनी थी वो जा करके। स्टोरी क्वेस्ट से फोर्ट्रेस में ले तब जा करके भगवान की स्टैचू छू। क्या बोलती हो जैक, सही है ना? सही है। एक तो बात है यार, जैक ही तो असली फुरीना, बात लेकिन मुझे इस बार समझता है, ऐसा लग रहा है कि बाकी थोड़ा सब सा तो लोगों ने नन्हे मार। बैलेंस आर्कॉन निकाला है, मतलब नहीदा जैसा ओपी नहीं निकाल दिया एकदम। क्योंकि उसका डैमेज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे बहुत ज़्यादा ब्रोकन डैमेज है, फिर बहुत ज़्यादा ब्रोकन हील है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा अभी तक, मतलब कि अभी तक जितना मेरा है। अब नहीं आऊंगा मैं, दूर कर गया हूँ मैं, अब वापस नहीं आऊंगा तुम के पास। Now disappear. A round of applause. Stabilize. Step right up. C2 ले लो, C2 ब्रोकन है। C2 अल्टीमेट का ही बढ़ाती है, खुद का डैमेज नहीं बढ़ाती, लेकिन खुद का कोई बढ़ेगा नहीं, आर्कन का खुद का डैमेज है ही नहीं। नहीं इसका है, फरीना का है खुद का डैमेज, वरना फिर डैमेज का क्यों सॉर्ड होती है उसके पास, थोड़ी ना डैमेज से कुछ उसका वो हो रहा है स्केल। HP तो बढ़ाती है। HP बढ़ाती है ना, लेकिन उसको अगर उसको प्योर सपोर्ट ही देना होता तो वो लोग फिर HP देते ना उसके स्वॉर्ड में सब स्टैट, फिर डैमेज क्यों देते? बैलेंस होगा इसलिए। नहीं सपोर्ट और डैमेज, वो उसका खुद का भी डैमेज आएगा ज़्यादा, इसीलिए जो है उन लोगों ने फिर डैमेज दिया है। Teamwork is dreamwork. Let's try till I'm dead. Now disappear. Here comes the finale. Stabilize. And voila! Now disappear. बवासीर, ये भी बवासीर। क्या बोल रहा है बवासीर बोलो। आर्टिफैक्ट ढंग के नहीं मिल रहे भाई कुछ। अरे वाह, कितना बढ़िया आर्टिफैक्ट मिला है। और करो फार्म, बढ़िया आर्टिफैक्ट मिल रहा है भाई। एक आर्टिफैक्ट नहीं मिला है, बढ़िया आर्टिफैक्ट मिल रहा है। अरे उसके सबस्टैट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, फ्रेजाइल यूज कर लो तुम, फार्म करो आर्टिफैक्ट, फीलिंग आ रही है मेरे को अच्छे मिल जाएंगे। सब स्टैट भी नहीं अच्छे मिल रहे ना भाई। सीडी मिला है, डिफेंस में स्टैट है, किट डैमेज मिले 2 में। ऐसी बातें कर रहा है यार लड़का। अरे मर गया, अरे भाई यार। नहीं है तुमने मेरे, तू
धूप मरवा दिए बल्ले। Step right up. यही बोला है। कितने हो गए ऐसे? पुरीना के 9 हो गए हैं। मैं आता हूँ 1-2 घंटे में। है हेलो आर्टिफैक्ट फार्म हो रहे थे कहाँ 1-2 घंटे हेलो। अरे मैं बाहर ये जाना है अभी। अबे तो इसीलिए मैंने ऐसे उसका कैसे हो फुरीना का जाता है कि ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नहीं द ब्लू नहीं तुमको। अरे इसीलिए मैंने अपने में फुरीना को इसको बीच में होल्ड रख के तुम्हारा को किया ना। चलो ठीक है जाओ। मैंने कहा भाई एकदम से तो वो ले लेते हैं। This route. If you ever...